Today we'll discuss about congestion control. First of all, what is congestion? Congestion is the capacity of the network when the load on the network is greater than the capacity of the network. That means in each network it has a capacity to handle how much data it can handle. Now, when the load in the network, that means the data transmission through the network, that becomes the load. So, when the load is greater than the capacity of the network can handle, then the congestion occurs. Now, there are two types of congestion control. Basically, congestion control is the responsibility of the transport layer. So it can be controlled in two ways. One is the open loop congestion control, another is the closed loop congestion control. In this lecture, we will concentrate on open loop congestion control. So ये open loop क्या होता है? जब congestion already नहीं हुआ है, but there is a chance of congestion. So that is known as open loop congestion control. So in this congestion control we can prevent congestion सिचुएशन होने वाला है, इस टाइम हम लोग congestion को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. And in case of closed loop, congestion has been already occurred and we are trying to come out from the congestion situation. So we'll start open loop congestion control with retransmission policy. Now in our flow control chapter, we may remember that there are three processes of flow control. First is the stop and wait policy. Stop and wait में क्या होता था? When we send a packet or frame, then we, after sending that frame, we will wait for the acknowledgement, और acknowledgement आने के बाद हम लोग next frame को भेजते थे. But that process is inefficient because it is very slower. So there are two window policies. One is go back in, another is selective repeat. In case of go back in, whenever a frame, we can send multiple frames at a time. जैसे हम लोगों का stop and wait में एक ही frame एक time भेज सकते थे. In case of go back in, we can send multiple frames without waiting for the acknowledgement of the first frame. But the problem of go back in is whenever a frame is lost, all the frames after that reaching to the destination successfully, that those frames will be discarded. एक फ्रेम मान लो 2 नंबर फ्रेम हम लोगों का लॉस हुआ है, उसके बाद 3 और 4 ये दोनों फ्रेम सही सलामत डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, लेकिन स्टिल we have to repeat 3 and 4 after retransmitting frame number 2. 2 को भेजने के बाद फिर से 3 4 को भेजना पड़ता था. But in case of selective repeat, 3, if frame 2 is lost and 3 4 reach to the destination successfully, we will keep the frame 3 and 4 in a temporary buffer. हम लोग एक temporary buffer में receiver end में उसको store करेंगे, and whenever we will retransmit frame 2 भेजने के बाद we will deliver frame 2 3 and 4 simultaneously. 2 फेल होने के बाद 3 4 अगर सही से पहुंचता है रिसीवर तक, तो फिर से हम लोग जब 2 को रिट्रांसमिट करेंगे तो 2 3 4 एक साथ डिलीवरी दिया जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिव रिपीट. जो फ्रेम लॉस्ट हुआ है उसी को हम लोग रिपीट करेंगे. नाउ
इन केस ऑफ रिट्रांसमिशन पॉलिसी हमें देखना होगा कौन से एआरक्यू टेक्निक में रिट्रांसमिट करने का चांस कम है. Now, in case of go back in, when a frame is lost, we have to retransmit all the successive frames. दो लॉस्ट होता है तो तीन चार भी हमें रिट्रांसमिट करना होगा. बट इन केस ऑफ that is in the case of go back in. But in case of selective repeat, we have to retransmit only the lost frame. अगर टू लॉस्ट हुआ है तो टू को ही भेजना होगा. थ्री फोर टेम्पोररी बफर में स्टोर रहेगा, उसको रिट्रांसमिट नहीं करना पड़ेगा. So if we are restricting the number of retransmitting frame, तो हम लोग नेटवर्क के ऊपर कम प्रेशर डाल रहे हैं. सिर्फ टू को ही भेज रहे हैं, तीन चार को रिट्रांसमिट नहीं कर रहे. That is retransmission policy. Then window policy. We already came to know that selective repeat and go back in are the window policies. So they are much efficient than stop and wait policy. So if we are having congestion in stop and wait, then we can change to any of these two policies. Acknowledgement policy, where we are sending each acknowledgement, it means there is a extra transmission. हर एक acknowledgement भेजने के लिए हमें एक transmission करना पड़ता है. Now in case of stop and wait, for each frame we have to send an acknowledgement. एक frame जाएगा, उसका acknowledgement आएगा, उसके बाद ही next frame जाएगा. So for each frame we should send an acknowledgement. Now when there is a situation of congestion, we want to restrict we want to restrict our traffic as much as possible. तो हम लोग ट्रैफिक को कम करना चाहते हैं. इसका मतलब नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट अगर कम भेजते हैं हम लोग, that means we need lesser transmission. So in case of selective repeat and go back in, we can send combined acknowledgement instead of sending acknowledgement for each frame. So we can switch over to any of these policies. Discarding policy. Now what is discarding policy? If there is a situation of congestion and our router is diagnosing this, राउटर को पता चल रहा है कि there is a congestion situation, congestion होने वाला है, तो राउटर क्या करेगा? राउटर will forward only the important packets or high priority packets. Now we can set this priority of packets inside IP header. So सिर्फ जो हाई प्रायोरिटी पैकेट्स है वही अभी फॉरवर्ड किया जाएगा, बट द लोअर प्रायोरिटी पैकेट्स विल बी फॉरवर्डेड लेटर. जब कंजेशन सिचुएशन से हम लोग बाहर आएंगे तब हम लोग लोअर प्रायोरिटी पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे. एडमिशन पॉलिसी. व्हाट इज एडमिशन पॉलिसी? In case of connection oriented protocol, before sending the data we have to establish the connection. That means we have to fix up the path between the two parties. A और B में अगर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो A और B के A से B जाने के लिए या B से A आने के लिए जो रास्ता है वो पहले फिक्स्ड हो जाएगा. आफ्टर दैट वी विल सेंड द ओरिजिनल डेटा. तो ये रास्ता फिक्स्ड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू रिक्वेस्ट फॉर अ कनेक्शन. जो पार्टी पहले ए या बी में जिसके पास पहले डेटा है, जो पहले डेटा भेजना चाहेगा, वो दूसरे के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगा एंड दैट रिक्वेस्ट विल फ्लो थ्रू द राउटर. तो राउटर जब देखेगा कंजेशन सिचुएशन है, वो कनेक्शन रिक्वेस्ट को ही स्टॉप कर देगा, उसको ही फॉरवर्ड नहीं करेगा. सो इफ कनेक्शन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड देन देयर विल बी नो डेटा एक्सचेंज बिटवीन दिस टू पार्टी. तो डेटा एक्सचेंज से पहले ही उसको बंद किया जा रहा है ताकि हमारे नेटवर्क में और ज्यादा प्रेशर ना आ जाए. So these are the open loop
congestion control policies which we can use to prevent congestion.